So sorry for the delay, guys. We are actually 1 or 2 minutes, started late because something was loading out here in the screen. So yes, welcome everyone. Good morning, and let's hope आज का दिन हमारा profitable रहे, since we have our you know morning session where we will discuss about the market. अगर market की बात भी की करें तो एकदम flattish to positive ही है Nifty, and कल का दिन हमारे लिए कुछ अच्छा सा था, हमने अच्छा खासा निफ्टी में मोमेंटम देखा था, राइट। एंड अगर दूसरे भी इंडेक्सेस का बात करें, बैंक निफ्टी भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव है, इट्स अराउंड 100 पॉइंट्स अपसाइड, राइट। एंड सेंसेक्स एकदम 0.01% ट्रेड कर रहा है, इट्स वेरी फ्लैट, सो एकदम फ्लैटिश नोट पे मार्केट ओपन हुआ है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस टू द एंटायर रेस्ट ऑफ द डे। कि आज हमें थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा दिख, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि हमें सुबह फ्लैटिश देखने मिलता है, बट आफ्टर सर्टेन आफ्टर सम टाइम आई वुड से एक हमें 100-200 पॉइंट्स का एक स्विंग दिखता है, उसके बाद से सेलिंग दिखता है ऊपर से, राइट। सो यही चलते आया काफी दिनों से, काफी हफ्तों से, ऑन अ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात भी किया जाए। सो लेट्स सी हाउ इट गोस टुडे, एंड लेट्स सी कि आज हम किस तरीके से कैपिटलाइज कर पाए इस मार्केट में, या किस डायरेक्शन में हम प्ले कर पाए, and if there will be any potential stock where we can talk about, or we can initiate our intraday or delivery, we will be definitely going to initiate the same as well. Guys, we will definitely take up your stock queries, since we will have our expert joining with us shortly. Allow us like couple of minutes. I'll just check with the expert Madhur sir, and I'll get back to you guys. So I guess Madhur sir is already here. तृप्ति जी, आपने अगर एक्सिस बैंक अगर होल्ड किया है, यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट, क्योंकि हमने लास्ट के एक हफ्ते में एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, राइट। 940 943 के रेंज से वो अच्छा खासा कभी 1000 पॉइंट्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सो यस, यू कैन डेफिनेटली होल्ड इट। अगर यहाँ से ये सस्टेन कर जाता है तो आपको और अच्छा खासा अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है। So Madhur sir, can you let me know if I'm audible? Yes, Avinash. Then great. So let me know if when we are good to go. I can clearly see your screen. Yeah, we are good to go, Avinash. So yes, very good morning, everyone. Welcome back to the morning session. Right, yesterday we had quite a good session. We booked the almost 60-70 points in the Sensex bull call spread, and जो target था हमारा वो hit हुआ है कल. Right, so back-to-back profitable session. Last Thursday, then yesterday, so it's good, right? And Nifty is doing quite well. As of now, trading near 23,777 level, right? So if I talk about the level now, Nifty need to cross 23,800 for the upside move towards 24,000, right? 23,800 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है यहाँ पर. थोड़ा सा डिप में भी आ सकता है, बट ओवरऑल जो बायस है पॉजिटिव रहेगा. Bias will be positive towards the momentum can continue towards 24,000 and then 24,444 level. Positional basis, we can see the Nifty support to the 23,333. A few weeks back, we were talking about the support around 22,800. Nifty took support there, and then from there onwards, we can see the value of 1,000 points last 8 months trading, and that's why now the support is shifting to the other side towards 23,333 on the positional basis. On the immediate basis, support is seen around 23,650, 23,600 zone, while the 24,000. So 23,650 on immediate basis, 24,000 ऊपर में resistance रहेगा, right? Once the Nifty crossed 24,000, we can see the momentum towards 24,444 zone. The good part is Nifty is trading all about short-term moving averages, though it's a 50, 20. Now the 100 DMA is around 23,900, right? So
this is the update on the Nifty. Now, if I talk about the Bank Nifty, yesterday we have seen almost 1,000 point rally in the Bank Nifty as well, right? And trading about 200 DEMA. Yesterday, clearly a bullish engulfing candle in the Bank Nifty. Almost 1,000 point rally हमें देखने में मिली है. So Bank Nifty earlier it was struggling around 50,000. Yesterday it crossed the 50,000 and sustained above that. Now trading around 50,300. One we can see the momentum in Bank Nifty towards 50,500 and then 51,000, while the immediate support is seen at 50,000 and then 49,750. Overall structure is काफी positive है. All the banking banks are doing nice. HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Even yesterday we have initiated the CDI call on the Axis Bank as well. So few stocks on the radar for the CDI. One can see the GeoFin. We have just initiated the CDI call on the GeoFin. GeoFin right now trading at the 254 level. So one can buy the GeoFin at the current level as well, or even in some dip with a stop loss of 242 for the upside target towards 260, 262 level. So all the finance stocks are doing very well. One can look the Bajaj Finance, Bajaj Finserv, right? So now already we have booked some profit in Bajaj Finance in last 2 weeks. Now we are given the CDI call on the GeoFin. One can buy at the CMT or in some day with a stop loss of 242 for the upside target towards 260, 262 level. Great. So guys, we have shared a delivery ID on Geo Financials, currently trading near 250, 23 levels. हमें ये level पे buy करना है, and with a stop loss of 242. Target for the upside will be 262. Right. Even the exchange related जो counters है उसमें काफी अच्छा momentum है. One can see the BSC, MCX, CDSL, KFintech. So आप इसमें भी आप जा सकते हो. But BSC आज result है तो आप उसे volatility उसमें देख सकते हो. So BSC किसी को अवॉइड करना अवॉइड कर सकते हैं. सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. बट MCX है, KFintech है, काफी अच्छा मोमेंटम है. आप तो उसमें भी आप ध्यान रख सकते हो. Great. So meanwhile, sorry, Madhur sir, can we take few queries? Sure. आप किसी और सेक्टर स्पेसिफिक कुछ बात करना चाहोगे या मार्केट में इसके अलावा कोई न्यूज आ रहा है या है इस पे अगर आप बात करना चाहोगे तो? नहीं अविनाश, सब तक तो इस क्वेरीज देख लेते हैं, राइट? बिकॉज कल भी क्वेरीज बहुत सारी थी, बट सेंसेक्स के सेशन में से क्वेरीज नहीं ले पाए थे हम लोग. श्योर सर. सर सन टीवी कल स्टॉप लॉस हिट हुआ. Overall structure wise काफी weak है. It's better to avoid because you can see the stock is in downtrend on a daily, on a weekly time frame, or even on a monthly time frame. So better to avoid, right? We have more better counters. Look at the Bajaj Finance, look at the Mahindra, look at the other counters like iShare, Escort, the more strong counters. Better to avoid Sun TV. Axis Bank. So Axis Bank सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. Yesterday हमने इस पे सीडीआई कॉल भी इनिशिएट किया है. So अगर किसी ने बाय किया है तो वन कैन होल्ड, राइट? I'm showing the chart. Private banks are doing quite well. डेली में नेगेशन हुआ है और विथ वॉल्यूम. सो एक्सिस बैंक ऊपर में हमें लग रहा है कि 1050 तक के टारगेट इसमें आना चाहिए. Great. Indian hotels. Setup wise काफी strong है, forming a height of higher bottom from last 4 trading session. Stock can head towards 870, 880 level in coming session. So किसी ने बाय किया है नीचे के लेवल में वो बने रख सकते हैं. किसी को फ्रेश बाय करना है तो वन कैन बाय
around 820 level. Stock can head towards 870, 880 level. Okay. Title. Stock is in range of almost 300, 400 points in the last 4 to 5 trading session. 3500 is the strong support zone for the Titan. One can buy around 3500. The stock can head towards 3700 in coming session. Overall setup wise काफी अच्छा है, right? थोड़ा सा consolidation phase में है, but setup काफी अच्छा है. Tata Power. टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज एंड गुड पार्ट दैट इज सेलिंग इंटेंस सेलिंग था वो रुक गया है साइडवेज हो चुका है स्टॉक्स बट द मोमेंटम विल क्रिएट अबाउट 385 ओनली till the time you can play the range of from 360 to 385 once the stock has crossed and surpassed 385 level it can head towards 420 level. So, Madhur sir, do we have any intraday trade for today? Avinash, one can go with MCX. As of now, trading at 6,100. Stock is up by more than 4% and surpassing its 50 EMA as well, forming a height of higher bottom on a daily chart. So one can buy the M6 at the current market price. Stock is trading at 6,100 with a stop loss of 6050. ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 6,150, 6,170 टारगेट इसमें आना चाहिए. यहाँ से 50-60 रुपए का मोमेंटम इसमें आना चाहिए. Great. So guys, we have shared an intraday trade on MCX. We have to buy it in a range of 6,100 and with a stop loss of 6050. The target for the upside will be 6150 and then 6170. Right, sir? Yes, yes. Okay. So what is your view on JSW Steel? As of now, the structure is looking positive and forming a height of higher bottom. But the problem is it's not able to surpass the its earlier resistance zone that is 960 level. Once the stock has surpassed 960 level, stock can head towards 980, 990,000 level. So keep the level 960 on the radar. One can buy up to 960. Okay. Asian Paints. So Asian Paint overall structure wise it's weak, right? Even कल result भी आया but result के बाद शायद almost stock is down by more than 4%. So it's better to avoid as of now to uh, hold its support zone because up the stock from last 4 to 5 months stock is in continuing down trend, right? It made a high around in September around 3394 और वहां से almost 1,000 points stock down है. It's better to avoid as of now, right? Support की मैं बात करूँ तो 2100 is a strong support zone, so one can buy around support zone. Kalyan Jewellers. So looking at the Kalyan Jewellers chart, ऊपर से काफी करेक्शन हमें देखने मिला है बट द गुड पार्ट फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन वहां से जो इंटेंस सेलिंग था वो कम हुआ है एंड शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ है स्टॉक्स में लास्ट 2-3 days back and yesterday also it was up by more than 12%. Today it's trading flat.
बट स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है स्ट्रक्चर। 580 के ऊपर इसमें नया मोमेंटम क्रिएट होगा। वंस स्टॉक सस्टेन अब 580 लेवल, it can head towards 620 640 level. So, Madhu sir, since this is a question from my end, and I also wanted to address this, and ये सारे हमारे members के पास भी मैं चाहता था कि जाए. Since I was tracking the railway sectors, and अगर मैंने जब देखा तो सारे rail sectors के जो stocks है, जिसमें अच्छी खासी तेजी है. So, is there any specific news for it जहाँ पे हमें ये तेजी देखने मिली है, जैसे कि RVNL, IRFC, RailTel या IRCTC, ये सारे stocks की बात किया जाए तो? Yeah, I'm just give me Avinash 2 minutes. I'm tracking the chart, right? But problem is के अविनाश जो प्री बजट इसमें काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला था, बट बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं था रेलवे के ऊपर, तो वहां से फिर से हमें इसमें सेलिंग देखने मिली है। तो इवन आरबीएल आज देखिए आप, एज ऑफ नाउ तो ऊपर है 2-2.5%, बट पोस्ट बजट स्टॉक इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 10 to 12%, राइट? नाउ लुक एट द आईएफसी एज वेल। एज ऑफ नाउ आज थोड़ी सी तेजी देखने मिली है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। एज ऑफ नाउ बेटर है इसको अवॉइड करें हम लोग। ट्राई टू बाय अराउंड सपोर्ट जोन, बिकॉज बजट में जो इसको एलोकेट होना चाहिए था वो उस पर कुछ न्यूज आया नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव बायस है वो स्टॉक के लिए। जैसे आईआरएफसी का सपोर्ट है अराउंड 133 लेवल के आसपास, वहां पर आप बाय कर सकते हो फॉर द 140। सो मे भी थोड़ा सा आज पॉजिटिव है, बट द ओवरऑल बिकॉज ऑफ द बजट वहां पे कुछ इसमें एलोकेट नहीं हुआ है कुछ खास, तो वहां से नेगेटिव इसके लिए हो रहा है। सो सपोर्ट के आसपास बाय करें, जो भी रेल पीएसयू है, आईआरएफसी है, इरकॉन है, आरबीएल है, राइट, जुपिटर वैगन है, सपोर्ट के आसपास बाय करें, थोड़ा सा आप उसमें तेजी प्ले आउट कर सकते हो। Great, great. Thank you, sir, for giving an insight about it. Mansi ji, I hope this also answer your query about on IFC. So, what is your view on PGCIL? पीजी CIL. नहीं आ रहा है अविनाश यहाँ पे, कैन यू View स्पेल? on PGCIL and power sector. Ashwin Kumar ji, could you please write it properly? PGCL, there is no stocks we have found. We'll move ahead with another query. So, can we talk more on power stocks, Madhu sir? Power sector, sorry. Power Okay, sector. look at the Nifty energy. So looking at the Nifty energy, all the index is in a little bit in downtrend, right? You can see the index, it made a high around 44,000 in September, and from there onwards you can see the correction of more than 15-20%. So overall structure wise अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो थोड़ा सा वीक है। नाउ अगर मैं पावर सेक्टर्स में देखे तो एनटीपीसी का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। So NTPC structure is almost similar, stock is in downtrend. So as of now कोई खास इसमें momentum है नहीं। अभी पूरा सेक्टर sideways to negative trade हो रहा है, so better avoid करें। Go with the financial services, banking stocks, Nifty auto looking very nice, so वहाँ पे आप तेजी कर सकते हो। Better to avoid as of now power sector. Great. Acme Solar View. Stock is up by 7 to 8%. In morning today, around 9:20, we are given the CDI call on this and almost book nearly 3 to 4%. But overall, जो इसका it's a recently listed stock right in November, वहां से एक हमने अच्छा आपको देखा था towards 300, then वहां से करेक्शन देखने मिला towards 167, 167 पे सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर 222 लेवल, सॉरी। सो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अराउंड 205 के आसपास, बिकॉज लास्ट 2-3 दिन में काफी तेजी देखने मिली है। ट्राई टू बाय अराउंड 200, ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 240 215 कमिंग सेशन। Great. I guess we have covered a lot of queries today. Considering कि कल हमने लिया नहीं था तो we had tried to make it up today. So we'll take guys 2 more queries before we conclude the session. And yes. So what is your view on power grid?
So, just 2 minutes back, we discussed the power sector, right? So, looking the chart of the power grid as well. कोई खास momentum यहाँ पे नहीं है. Stock is in downtrend, forming a rounding top in on the weekly time frame. तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है अराउंड 270 के आसपास, बट अभी भी कोई खास मोमेंटम है नहीं यहाँ पर. किसी को बॉटम फिशिंग प्ले आउट करना है तो यू कैन बाय अराउंड 270 बिकॉज़ दैट इज अ स्ट्रांग सपोर्ट जोन, राइट? सो वन कैन बाय अराउंड दैट 270, बट एज ऑफ नाउ कोई खास मोमेंटम है नहीं. Great. So this will be the last query, guys, for today. What is your view on FL? Apple. Yes, FL. AFFLE. Apple. Okay. The stock is up by 4% and एक range breakout हमें देखने मिला है आज after a long time with a good volumes. So one can अगर नीचे में किसी ने buy किया तो आप hold कर सकते हो, right? अगर किसी को buy करना है तो one can buy around 1550, थोड़ा सा 25-30 पॉइंट डिप में आप ऐड कर सकते हो. अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 1600 1620 लेवल. Great. So the very last query we have from a very old member, Mayurji. What is your view on Angel One? I guess the stock is up by more than 5% today. Almost nearly 5% and यहाँ पे एक हमें अच्छा वॉल्यूम के साथ जिसमें बाइंग देखने मिली है. इनसाइड का ब्रेकआउट हमें देखने मिला है आज. सो किसी को बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेश तेजी कर सकते हो. स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 2550 लेवल, 2600. यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम प्ले आउट हो सकता है. Great. So I guess that's it, guys, from our end. And guys, please post your queries on Stockholm. We will more than happy to answer your queries out there as well. And on that note, Madhurji, Vindu sir, if you want to add anything more, before we end the session, या कोई और stock होगा या जिसमें हमें delivery point of view देखना चाहिए या कुछ anything you want to add more before we end the session. Sure. So looking at the Nifty, yesterday we have seen a quite good run up, nearly 400 points. So maybe coming session थोड़ा सा sideways momentum हो सकता है निफ्टी में, because एक्सपायरी का जो बड़ा मूव था वो कल आ गया है. तो शायद एक तो सेशन में निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम देखने ना मिले. एक रेंज के अंदर निफ्टी कामकाज कर सकता है. एंड स्टॉक स्पेसिफिक हमने काफी डिस्कशन किया. गो सीडीआई जैसे हमने जियो फिल्म में बोला था, एक्सिस बैंक में बोला है हमने, उसमें नजर रखी है. अगर किसी को पोजिशनली फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए बाय करना है तो वन कैन लुक एट द बजाज फाइनेंस, बिकॉज एक मंथली में ब्रेकआउट उसमें देखने मिला है हमें. सो कीप ऑन योर आईज, राइट? सो दैट्स इट. नाउ इन इवनिंग सेशन वन the representative will tell more on the stock specific and other things. So yes, that's it, guys, from our end. Thank you so much for joining. Please don't forget to join Ruchit sir in stock the stock session at 11:30 that we hold every day. And उसके अलावा we also have our afternoon trading session at 2:30 p.m. with our expert Arpit sir. So yes, that's it, guys, from our end. I am talking about the commodity sessions for this month will be scheduled by today or tomorrow. And हम आपको अपडेट कर देंगे all the commodity events we will have for this month. So thank you guys for joining. Thank you so much, Madhu sir.